The topic of discussion is alcohols and phenols, and the subtopic is reactions of alcohols. So in the previous lecture we have studied कि अल्कोहल्स जो हैं वो दो टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं, एक वो जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरे वो जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। CO बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल होगा और OH बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब अटैकिंग रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट would be the order of reactivity. When CO bond breaks, order would be tertiary alcohols, then secondary alcohols and then primary alcohol. सबसे reactive होंगे tertiary alcohols, then secondary alcohols and least reactive would be primary alcohol. And when OH bond breaks, then methyl alcohol would be reactive most of the, then primary alcohol, then secondary alcohol and then tertiary alcohols. Here are the reactions in which CO bond break. जब अल्कोहल जो है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा in presence of pyrimidine, it will form ethyl chloride और CO bond break होगा. When ethanol react with HCl in the presence of zinc chloride, it will form ethyl chloride. Similarly, CO bond will break. And in the last, it will react with ammonia in the presence of thioxide to form ethyl amine. And in this reaction, also CO bond will break. Here are the reactions in which OH bond will break. When ethanol react with sodium metal, it will form sodium ethoxide and OH bond will break. And when ethanol or any alcohol reacts with acetic acid or any carboxylic acid, it will form ethyl acetate, and in this reaction OH bond will break. Here is a practice MCQ. When ethanol reacts with sodium metal, then options are CO bond breaks, CC bond breaks, OH bond breaks and CH bond breaks, and the correct answer is OH bond will break. क्योंकि इस सिनेरियो में जो हमारे पास अटैकिंग रीएजेंट है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा. तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अल्कोहल पे तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि CO बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब अटैकिंग रीएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल होगा. Alcohols undergo oxidation to yield different kind of products. Oxidation of alcohols converts them into एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो एल्डिहाइड यील्ड करते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो कीटोन्स देते हैं हमें. एंड द रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. These are the reactions showing the oxidation of alcohol. Primary alcohol in the presence of potassium dichromate undergo oxidation to yield aldehyde, और aldehyde की further oxidation से we get carboxylic acids. These are the primary alcohols. When secondary alcohols undergo oxidation in the presence of potassium dichromate, they yield ketone, और ketones की further oxidation नहीं होती और carboxylic acids नहीं बनते, क्योंकि इनमें CH बॉन्ड नहीं होता जो कि एल्डिहाइड्स में प्रेजेंट होता है. कीटोन्स में C के साथ R बॉन्ड बना रहा होता है, एल्डिहाइड्स में जबकि C के साथ H बॉन्ड बना रहा होता है. सो दैट्स वाई कीटोन्स की हम फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते. प्रीवियस स्लाइड्स पे तो हमने देख लिया कि प्राइमरी अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें कीटोन्स मिलते हैं. सो लेट्स सी जब हम टर्शरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे व्हाट वी विल गेट. टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन. In presence of potassium dichromate, they undergo elimination reactions to give alkenes. वो oxidation undergo नहीं करेंगे बल्कि वो elimination reactions undergo करेंगे to give alkenes. So here is a tertiary alcohol. जब हम इसे potassium dichromate की presence में oxidize करेंगे, it will not form any aldehyde और ketone, बल्कि ये elimination undergo करके alkene बना देगा.
Here we have a practice MCQ. Primary alcohols upon oxidation with acidified dichromate give aldehydes, branched alkenes, ketones, and all of these. And the correct option is aldehydes. Primary alcohols yield aldehydes, secondary alcohols yield ketones, while tertiary alcohols they don't undergo oxidation बल्कि वो elimination reactions undergo करके हमें alkenes देते हैं. Alcohols also undergo dehydration in the presence of concentrated H2SO4 and at different temperatures give different products. For example, जब ethanol को हम 180 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट यील्ड इथीन यानी कि अल्कीन्स बना देते हैं. बट इफ एथेनॉल इज ट्रीटेड विद H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस यानी कि लेसर टेम्परेचर पे होगा सो इट विल यील्ड एन ईथर दैट इज डाइइथाइल ईथर. अगर हाई टेम्परेचर पे है देन इट विल यील्ड एन अल्कीन और अगर लो टेम्परेचर पे है देन इट विल यील्ड एन ether. Here's a practice MCQ. Excess alcohol at low temperature in presence of concentrated H2SO4 gives ether, organic acid, ester, and alkene. And the correct option is ether. Next is the reactions of alcohols with phosphorus halides. Alcohol react with PCl3 to give ethyl chloride and H3PO3. Another reaction is ethanol reacts with PCl5 to give ethyl chloride with POCl3 plus HCl. Here is an important test by which we can differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols. Let's see. We use a reagent that is a mixture of concentrated HCl and zinc chloride, and result would be an oily layer separates out in the reactions. Tertiary alcohols form an oily layer immediately, while secondary alcohols form an oily layer in 5 to 10 minutes and primary alcohols form an oily layer on heating. So इस तरह से हम primary, secondary और tertiary alcohols को separate कर लेंगे. जो फौरन से बना देंगे that would be tertiary, जो 5 to 10 minutes में बनाएंगे वो secondary और जिन्हें हमें heat करना पड़ेगा they will be primary alcohols. So these are the reactions. This is a primary alcohol. It will react with HCl in the presence of zinc chloride. कोई reaction नहीं होगा या बहुत slow reaction होगा हमें उसे heat करना पड़ेगा. Here we have a secondary alcohol. It will react with HCl in the presence of zinc chloride and it will yield a chloride. ठीक है, alkyl chloride बनेगा H2O but after 5 to 10 minutes. And similarly, here we have a tertiary alcohol. It will also form an alkyl chloride and but ये जो है वो immediately बन जाएगा. In this slide you can see a positive Lucas test and a negative Lucas test. अगर ये बिल्कुल एक transparent solution होगा तो it would be negative और negative test कौन देगा? Primary alcohols. जबकि जो positive test किसके लिए आएगा? Tertiary alcohols के लिए. और अगर आप 5 से 10 मिनट वेट करेंगे तो ये टेस्ट पॉजिटिव secondary alcohols भी देती हैं, लेकिन primary alcohols will give a negative test. Here is a test that distinguishes between methanol and ethanol. Ethanol forms iodoform with iodine in the presence of sodium hydroxide. Formation of yellow crystals indicate that alcohol is ethanol, while methanol does not give iodoform test. So अगर yellow crystals appear हो जाएंगे टेस्ट में तो it would be ethanol, और अगर yellow color appear नहीं होगा, transparent solution रहेगा, it would be methanol. So in this slide you can see ethanol reacts with 4I2 iodine in the presence of sodium hydroxide to give CHI3 that is iodoform, जबकि जो methanol है वो reaction ही नहीं देता, no yellow purity, and this is positive iodoform test. You can see yellow crystals. So this was all about the reactions of alcohols. I hope you have understood it well and thank you so much.